Okay. Coming to our revision class for practical geometry. Today I am going to do revision for construction of rectangle. Construction of rectangle. Is it okay? Okay, sir. Okay. So rectangle, if we simply go to page number 191, there is a heading constructing a rectangle. Go to page number 191. Yes, sir. Constructing a rectangle. A rectangle is a special type of quadrilateral which has opposite sides parallel and equal. All angles equal. Equal diagonals that bisect each other. तो rectangle क्या होता है? A certain figure की opposite sides are equal. All angles are 90. Yes. And also that the diagonals are equal and they bisect each other. Diagonals are equal and they bisect each other. Is it okay? Yes, sir. Now, coming to the construction of rectangle, the first type, to construct a rectangle given the length of its adjacent side. Length of adjacent side. अगर ये दोनों दे रखा है साइड, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये मिल गया कि नहीं, और इसके साथ ये मिल गया कि नहीं? Yes. नो, हमको ये भी तो मालूम है कि हर एक एंगल 90 है. So how many known information we have? 4 angles and 4 sides. 8 known information. और हमको, if you remember the class, that minimum 5 information is required to construct a quadrilateral. Rectangle also minimum 5. यहाँ पे 8 हो गया. So we can start with anything. Is it okay? We have enough data to construct this type of rectangle. Clearing this and going to the exact example given in the textbook. Construct a rectangle ABCD with AB and BC given. Rectangle रफ स्केच बनाना है, बट रफ स्केच हमको मालूम है कि वो एक रेक्टेंगल है, तो एक रफ स्केच भी हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा. A, B, C and D. In that, the two adjacent sides are given that AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. Is it okay? Is it okay? Okay, sir. Now, the starting point will be, let's see, we can start with one of the side. Starting point, let's take, यहाँ पे हमारा रफ स्केच में A भी आराम से नीचे दे रखा है. We can start with that or not? So AB कितना है? 5 centimeter. We have drawn that AB. क्या है? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये कितना है? 5 centimeter है. Any doubt in that? Any confusion with that? Any confusion with that? No, sir. No. Now we know that at the point B or any point, the angle is 90. So we can make an angle 90 at the point B, but not making it the using a protector, making it using a compass. What we simply need to do is take an arc of any length. Take an arc of any length
without changing that, putting it first time, it will give you 960, and then keeping you second time, it will give you 120. Now what you have to do is do that over there one more time, and without changing that anything you are doing, sorry यहाँ पे change हो गया, fix नहीं कर पाया इसको, but I know how to do that. Wait 1 second, ये वाला आर्क यहाँ से लिया था, इतना ही लिया था, इसको फिक्स कर दिया. नाउ इसको यहाँ पे एंगल 90 बनाना तुम्हारा काम है. तुम्हें नहीं आता है तो यहाँ पे इतना देख कर कंफ्यूज नहीं होना. एक जगह पे कट हो रहा है, वो एंगल कितना है, 90 है. Is it okay? Yes, sir. If at all any doubt with that, get back to watch the video again, see the video again. I'll repeat that simply take any length arc, इसको यहाँ पे रख के, if you are taking for the first time, that will give you 60. Without changing the arc, if you take for the second time, it will give you 120. और ये दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो 90 आएगा. And this is the ray of 90 degree. Now from B, the point C is at distance of 4 centimeter and along the perpendicular. So जो मेरा point C है इसी perpendicular के ऊपर है, और कितने दूर है, 4 सेंटीमीटर है. So I can take an arc of 4 centimeter. Is it okay? Now again, minor changes, minor issue does not affect your result. This is the length of 4 centimeter. Yes. This point is your C. Any doubt with that? Any doubt with that? No, sir. Then point A पे भी एंगल कितना है, 90 है. तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, 90 बनाएंगे. 90 बनाने के लिए we don't need the protector. Again, any length, any arc. Let me take a bigger arc. Is it okay? Now without changing that, keeping it over here, bringing for the first time, it will give you 60. Keeping there at the place of 60, doing it second time, it will give you 120. Now उसको ऊपर रख के थोड़ा सा, wait, it is going little awkward situation. It will going little awkward situation. 1 second. अरे यार इसको कैसे करेंगे, अरे भाई आजा, आराम से आजा. सॉरी, ऑनलाइन में इसको बोलते हैं, ऑनलाइन में जब करते हैं तो ऑनलाइन स्किल बोलेंगे इसको. टू रोटेट द आर्क विदाउट यूजिंग एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम. चलो एक बार कोशिश करते हैं, हो जाए एक बार में. हो गया. सो दिस इज योर 90 डिग्री. एनी डाउट विद दैट? No, sir. Now this is your 90 degree. If you simply remember that 90 degree बनाने के लिए यहाँ पे छोटा आर्क लिया था और ये बड़ा आर्क लिया था, बट बना 90 ही, एंगल 90 ही बना.
आर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, बट ओनली थिंग इज एक बार जो आर्क ले लिया वही आर्क हमेशा रहेगा. इज इट ओके? नाउ जो पॉइंट डी है ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? इज इट ओके? So then simply taking an arc of what? 4 centimeter from the point of A, take an arc of 4 centimeter. मिल गया? Join हो गया? Join that. Is it okay? ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया था यहाँ पर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया. ये पॉइंट मिल गया डी. इज इट ओके? Yes, sir. इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. Shall I do the next thing over here? Shall I do, or else I'll tell you in this only. एक बात तो जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? हाँ. तो हम एक काम कर सकते हैं, instead of taking an arc of 4 centimeter at this place, what we can go is, 1 second, sorry, क्लियर हो गया ये. मुझे ये नहीं चाहिए. इसका इरेजर कहाँ पर है? इरेजर नहीं है, ये वाला इरेज करना पॉसिबल नहीं है. इंस्टेड ऑफ गोइंग taking an arc of 4 centimeter and finding this point, what I can do, ये जो एंगल 90 आ रहा है, instead of taking an arc of 4 centimeter over here, what we can take an arc of 5 centimeter from the point C. So यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे तो भी उस प्लेस पे जाएगा कि नहीं? अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो, अगर ऐसा कुछ है तो बोल सकते हो, बट हाँ रिकॉर्डेड वीडियो है, you can simply watch 2 times to get a clarity. पहले क्या था और अब क्या है, यहीं पे आ रहा था ना करीब. बट अगर देखो तो ये क्या है, ये जस्ट टच होके नीचे आ रहा है. सो इससे हमको श्योरिटी नहीं मिल रहा कि हम कहाँ पे डाले वो पॉइंट को, डी के पॉइंट को कहाँ पे डाले. आर वी गेटिंग श्योरिटी? आर वी गेटिंग श्योरिटी? Are we getting surety of with 5 centimeter arc? No, we are not getting. For surety, we definitely need to take the arc of 4 centimeter. ये जो 4 centimeter का arc है, एंगल ए पे जो 90 है उसको वाला कर लेते हैं तो हमारा श्योरिटी आ जाता है एकदम. पॉइंट डी जो है सो एकदम श्योरिटी से आ जाता है. ये रहा वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट डी है. एनी डाउट विद दैट? No, sir. करके देखोगे तो आप ऐसे करो या पहले जो वीडियो रिकॉर्डेड है, सिंपली सी द वीडियो स्टार्टिंग जो है सो करेक्ट वीडियो है. अगर कंफ्यूजन नहीं होना है तो डू वॉच इट 2 times. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फॉर प्रैक्टिस go for doing question number 8 given on page number 195, exercise 13.2, question number 9. Question number 8. Question number 8.
मैं साथ में करता हूं, तुम भी करोगे. Is it okay? I will do the step and you also will do the step together, and then only I will move forward. Is it okay? Yes, sir. So question number 8. Construct a rectangle ABCD. Construct a rectangle ABCD A, B, C, and D with AB is equal to 6.3 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. Measurements different है पहले से. So first of all, everybody make the rough sketch. By the time I finish this, I will be asking you to send the photo. Is it okay? Parnika? Sir, she left. She left. Arushi? Yes, sir. By the time I finish, I'll be asking you to send the photo. Yes, sir. So take this and make the rough sketch as I made without confusion. Now, I'm moving to next step. I have this rectangle का rough sketch है जिसमें हर एक एंगल 90 है. Added information I have. और दो adjacent sides दे रखे हैं 6.3 and 4.4. I can start with the base AB because वो आराम से नीचे है. So I can start with AB और वो कितना है 6.3 सेंटीमीटर है. Is it okay? A, B और ये 6.3 है. Have you all done that? Have you all done that? Yes, sir. Okay. Now, एक चीज में क्या देख रहा हूं कि 90 डिग्री एंगल हर जगह पे होता है. तो आराम से पॉइंट ए पे भी 90 बनाओ और पॉइंट बी पे भी 90 बनाओ विदाउट कंफ्यूजन. पॉइंट ए पे 90 बनाओ और पॉइंट बी पे 90 बनाओ. सर So- प्रोटेक्टर से या नो, नॉर्मल कंपास से, ओनली कंपास. We can make angle 30, 60, 90, 120, 135. This kind of angle we can make using compass without confusion. So I have this one. I can make 90. Fine. Now, without changing the arc, taking in first time is giving me 60. Taking that second time is giving me 120. Now, without changing the arc, continuing the same thing without changing the arc, taking it upward and then taking it downward is giving me 90 degree angle. और सेम मुझे बी पे भी बनाना है 90 degree. I have to make 90 degree on B also, no? So I'm not yes. getting confused, simply continuing with the same measurement. Not getting confused and simply continuing with this thing only. Taking it first time is giving me 60. Taking it
Second time is giving me 120. Now without changing, taking upward, and without changing, upward from one point and then upward from other place. So from the both point, I have made 90-degree angle with the same measurement without getting confused. You must have drawn. I'll wait for you to complete this step. Don't worry. I have just completed it and I will wait for you. Done, sir. So both are 90. I can write that this is 90-degree and this is also 90-degree. Arushi, done. Avyuday? Prathamesh Bidrale? Sir, doing. Okay. 90 बनाओ जल्दी से. Next, my work is what? This is 4.4. So this length is also 4.4 only, no? Is it okay? Yes, sir. So what my work is? Simply taking an arc of 4.4 from the two vertices without confusion. So what is length of CB? Hmm? So what is length of CB? CB 4.4 ना? BC या CB दोनों का एक ही रहेगा ना मतलब? Yes. तो BC फर्स्ट पहले ऊपर ले रहे, यहाँ से ये 4.4 है और सेम ओवर ईयर ये भी 4.4 है. If we simply remember that this point जो है सो 90 डिग्री के एंगल पे 4.4 सेंटीमीटर अवे है. सो 90 डिग्री के एंगल पे 4.4 सेंटीमीटर अवे है, वो पॉइंट डी है. सिमिलरली एंगल पॉइंट बी पे जो 90 डिग्री है उस पॉइंट 90 डिग्री के अलोंग 4.4 सेंटीमीटर अवे 4.4 centimeter away, you have the next point C. Just join that. Simply joining that is completing my rectangle ABCD. Is that enough? Is that clear? Is it clear? ये 4.4 है, 7 नहीं हो. ये 4.4 है. Will it be okay? Okay. सब लोग अपना माइक कैमरा ऑन करो. Switch on your cameras once.
So I think this will be enough. This simply one example. This was the first day. So we try to do only one. We could do only one. Based on this, I will send you the homework. Do it. And yes, in the coming 2 to 3 days, I will complete one by one or two examples or two types in a single day. And then you have to submit that in review exercise in separate sheets. Review exercise में questions है, you have to submit that in separate sheet. Is that okay? Yes, Is sir. that- Okay. So आज जो Sir, कर I सकते have हो, doubt in perimeter and area. not now. Tomorrow, आज जो tomorrow. अगर आज जो रिव्यू एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन जाके सेपरेट कर सकते हो, एक शीट लेना है, एक शीट पे एक डायग्राम आएगा, उसके स्टेप्स आएंगे, और जो क्वेश्चन कर सकते हो दैट इज रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. इज इट ओके? सो इट शुड हैव बीन डन. जैसे आज मेरे साथ में एक कर दिए, वैसे ही मेरे बाद क्लास खत्म होने के बाद अगर एक कर दोगे तो वर्क साथ में खत्म हो जाएगा. 2-3 दिन में रिवीजन भी खत्म होगा और 2-3 दिन में तुम्हारा रिव्यू एक्सरसाइज का एक प्रोजेक्ट भी खत्म होगा. इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. So winding up this class over here, just to hardly 1 minute, you can leave the meeting. Chalo, leave the meeting.